वो राज्यसभा से आ रखी है, जहां पर एक बार फिर से भड़क गई जया बच्चन। लेकिन भड़की क्यों? दरअसल अमिताभ बच्चन के साथ नाम जुड़ने पर भड़क गईं। उन्होंने इस पर आपत्ति भी जताई। सभापति ने उन्हें जया अमिताभ बच्चन कह दिया तो इस पर वो भड़क गईं। उन्होंने कहा कि आप मुझे कृपया करके सिर्फ जया बच्चन ही बुलाएं। सभापति जगदीप धनखड़ ने ये कहा, उन्होंने उनसे कहा कि मैं कलाकार हूं, बॉडी लैंग्वेज और एक्सप्रेशंस जो हैं वो मैं समझती हूं। क्या इसके अलावा उन्होंने और कहा, आइए सुनवाते हैं। जया अमिताभ बच्चन इज द लास्ट स्पीकर ऑन दिस पॉइंट, प्लीज मैम। सर, मैं जया अमिताभ बच्चन ये बोलना चाहती हूँ, मैं कलाकार हूँ, बॉडी लैंग्वेज समझती हूँ, एक्सप्रेशन समझती हूँ। और सर, मुझे माफ करिएगा मगर आपका टोन जो है is not acceptable. We are colleagues, sir. You may be sitting on the chair. जया जी, and I remember when I went to school. जया जी, take your seat. जया जी, take your seat. Take your seat. Take your seat. Take your seat. Jaya, 1 second, honorable members. Honorable members. Honorable no. बैठिए। Honorable members, बैठिए। I know how to deal with it. बैठिए। जया जी, you have earned a great reputation. You have earned a great reputation. You know, an actor is subject to the director. You have not seen what I see from here. Every day, I don't want to repeat. I don't want schooling. I am a person who has gone out of the way. And you say, my tone? No, sit down to you. No, don't have floor now. No, enough of it. No, enough of it. You can't have it. You may be anybody. You may be a celebrity. You have to understand the decorum. No, nothing doing, nothing. No, not at all. I will not bear it. One second. Please sit down. Please take your seat. No. Never carry an impression that only you build reputations. We come here and build reputations. We live up to reputations. Nothing doing. No. Question number 196. Sushmita Dev. Sir, she's a member of parliament. How can you call her a celebrity, sir? She's a senior member of parliament. And the senior member of parliament has a license. Nothing is going on record. A senior member of the parliament has a license to run down the reputation of the chair, to question the tone and tenor. Yes, I have to be in reaction mode to take care of the situation. I have highest respect, but to make it a habit, my tone, my language, my temper, I don't go by script of others. I have my own script. I am not operated by anyone else. Nothing will happen, Kharge ji. Thinking has to be from within. Nothing will happen. We have to get. No, Jaya ji, take your seat. Jaya, take your seat. Take your seat. No. It is misconduct. It's a misconduct. तो आज कैसे सदन के अंदर फिर से भड़की जया बच्चन, ये आपने सुना। और धनखड़ ने भी उनसे कहा कि इस तरह से सवाल वो चेयर पर नहीं खड़े कर सकती। लेकिन दरअसल इसकी शुरुआत 29 जुलाई से हुई थी, जब पहली बार उपसभापति हरिवंश ने जया बच्चन को जया अमिताभ बच्चन कहकर संबोधित किया था। और तब से भड़की हुई हैं इसी प्रकरण को लेकर। उस दिन क्या कहा था, सुनवाते हैं आप। श्रीमती जया अमिताभ बच्चन जी, प्लीज। सर, सिर्फ जया बच्चन बोलते तो काफी हो जाता। यहाँ पूरा नाम लिखा था इसलिए मैंने रिपीट किया। ये जो है कुछ नया तरीका निकला है कि महिलाएं जो है अपने पति के नाम से जानी जाएंगी।
उनका कोई अस्तित्व नहीं है। चूंकि यहाँ नाम दर्ज है, नहीं सर, इसलिए मैंने कहा उनकी कोई उपलब्धि नहीं है अपने में और अस्तित्व नहीं आपकी है। बड़ी विशिष्ट तो ये उपलब्धि जो है नया शुरू हुआ है, आई जस्ट। तो एक बार फिर से सदन के अंदर जया बच्चन गुस्से में है और आपको बता दें कि अब जया बच्चन की तरफ से माफी की मांग की गई है और ये कहा गया है कि महिलाओं का सम्मान ही नहीं करना आता है। तो देखिए, जया बच्चन ने माफी की मांग की है क्योंकि ये लगातार जिस तरीके से भड़कती हुई नजर आ रही है, क्योंकि उन्हें संबोधित किया जाता है जया अमिताभ बच्चन को लेकर, और इसके बाद आसन की तरफ से माफी की मांग की गई है और ये कहा गया है कि महिलाओं का सम्मान ही नहीं करना आता है। क्या कुछ कहा गया है वो आपको सुनवाते हैं। जो कहा जाता है चेयर से, ठीक है, वो चेयर पे बैठे हैं, अलाउड है। अगर वो चेयर से बाहर हैं तो वो भी आम एमपी की तरह हैं, वो हमारे अन्नदाता तो है नहीं। I objected to the tone used by the chair. We are not school children. We are all, and some of us are senior citizens. I was upset with the tone, and especially when LOP stood up to speak, he had switched off the mic. How can you do this? ये तो परंपरा के खिलाफ है. You have to allow the leader. Who is going to protect us? The leader of opposition. We are all together in opposition. If you are not going to allow him to speak, if he is not going to be heard in the house, then what are we doing? And on top of that, I mean, every time using words which are unparliamentary, which I don't want to say in front of all of you. तो सुना आपने, लेकिन क्यों आखिर भड़की जया बच्चन? क्या ये पूरा मामला है और क्यों इतना हंगामा बरपा हुआ है जिसके लिए इतनी आपत्ति दर्ज कराती हुई या इतनी भड़कती हुई जया बच्चन नजर आ रही हैं? Jaya Amitabh Bachchan is the last speaker on this point. Please, ma'am. सर, मैं जया अमिताभ बच्चन ये बोलना चाहती हूँ, मैं कलाकार हूँ, बॉडी लैंग्वेज समझती हूँ, एक्सप्रेशन समझती हूँ। और सर, मुझे माफ करिएगा, मगर आपका टोन जो है is not acceptable. We are colleagues, sir. You may be sitting on the chair. Jaya ji. And I remember when I went to school. Jaya ji, take your seat. Jaya ji, take your seat. Take your seat. Take your seat. Take your seat. Jaya, one second, honorable members. Honorable members. Honorable no. बैठिए. Honorable members. बैठिए. I know how to deal with it. बैठिए. Jaya ji, you have earned a great reputation. You have earned a great reputation. You know, an actor is subject to the director. You have not seen what I see from here. Every day, I don't want to repeat. I don't want schooling. I am a person who has gone out of the way. And you say, my tone? No, she's giving to you. No, don't applaud now. No, enough of it. No, enough of it. You can't have it. You may be anybody. You may be a celebrity. You have to understand the decorum. No, nothing doing. Nothing. No, not at all. I will not bear it. One second. Please sit down. Please take your seat. No. Never carry an impression that only you build reputations. We come here build reputations. We live up to reputations. Nothing doing. No. Question number 196. Sushmita Dev. Sir, she's a member of parliament. How can you call her a celebrity, sir? She's a senior member of parliament. And the senior member of parliament has a license. Nothing is going on record. A senior member of the parliament has a license to run down the reputation of the chair, to question the tone and tenor. Yes,
I have to be in reaction mode to take care of the situation. I have highest respect, but to make it a habit, my tone, my language, my temper, I don't go by script of others. I have my own script. I am not operated by anyone else. Nothing will happen, Kharge ji. Thinking has to be from within. Nothing will happen. We have to get. No, Jayaji, take your seat. Jayaji, take your seat. Take your seat. No. It is misconduct.